No surprises, just as you predicted. Well, I am sorry, I'm doing it again. I'm very sorry. No surprises. Pakistan has been absolutely bossed by India to be eliminated, basically eliminated from the Champions Trophy. And yeah, we are here to once again rant and dissect whatever happened yesterday. So, welcome to the Art Circle. As always, Aram is here with me without his face because he's got some technical problems at his end. But yeah, Aram, first reflections. How did that defeat feel? Yeah, honestly, even though we expected it, but it hurts every time you see your team lose. But इस दफा ये वाले factors है कि most of us, and I'm talking on behalf of every fan that we've come across, हमारे circles में, friend circles में, families में, so the expectations were as low as they can ever get. So automatically, the disappointment level is not as much as it used to be, earlier on previous games. Man. I also felt that this is the most not underhyped, but you could use the word that it is the most underhyped Pakistan versus India game, and maybe if things do not change in the future, this trajectory will continue to go downwards due to Pakistan's fault that being. But I feel that see disappointment obviously at the end of the day hoti hai, but it isn't something that was unexpected for us. It was pretty much on the cards the way we got outplayed in both the innings. I think there needs to be a bigger, talk about everything more than just what had happened yesterday. What I'm trying to say is that it was not just about yesterday's game. It is something. It is a domino effect of something of all the things, all the factors that have contributed that we saw the result yesterday. So yesterday's game was a pretty good indicator of what has actually transpired throughout the years, what is happening within Pakistan cricket, and it was pretty much evident yesterday. So I think अच्छा है कि थोड़ा सा it is time for introspection because Pakistan cricket team, Pakistan cricket board always looks at things, revisits policies, revisits management, and all of that after defeats, after horrible exits. So, and the fact that it is the Champions Trophy that is being played in Pakistan, Pakistan are the defending champions, Pakistan are also the hosts, and Pakistan won't be able to make it to the semis is a big tag that the team has now associated with itself. So a lot needs to be talked about. But yeah, generally it was disappointing as a Pakistan cricket fan, but not slightly unexpected because we all knew this was bound to happen. It was just writing on the wall. We were trying to turn away ourselves from it, but at the end of the day, it just came. Yeah, absolutely. And I would say that at this point, there's a lot of apathy in the Pakistan cricket fandom, basically, because people are like, yeah, matlab, ab kya, matlab, I know it happens all the time. And jab PSL start over, everyone's gonna be back into it. Uh, but it's just that this time it just feels a bit different as well. Considering the fact that India didn't actually play that well. I mean, they were phenomenal, but they weren't at their best, and then they didn't outlast us like how they did in 2017, right? And part of it, part of the frustration is that Pakistan itself was just too cowardly with their approach, basically, and that really brings the conversation towards the batting wala part that we all were very happy that they managed to score at least like 50. I mean, even though modern cricket requires you to score higher, but still they scored 50 in the first 10. But then they absolutely like mm, repeated the same mistake from the last game by scoring 27 in the next 10. मतलब basically वही बात बन गई फिर at the end of 20 overs. And so मतलब like what was that
from Rizwan and Saud. I mean, not from Saud actually. Saud didn't actually waste that many balls. What was that from Rizwan, the captain? Yeah, I was pretty shocked to see the other. For example, you look at Babar and how he played in the first game against New Zealand. You say that Babar just किस्म की form में है, the form that he is in. You expect something a knock like this out of a player who is very low on confidence, low on form. He does not have much going on for him. So you could expect something this type of a knock from a player like Babur in such conditions. But a player like Rizwan, who has been in, you could argue much better form than Babur, and he recently was part of that record chase that Pakistan had in the tri-series against South Africa. He had that partnership with Salman Ali Abba. So you essentially thought that Rizwan इतना बुरा तो नहीं खेल सकता, but it was just shocking to see. वही वाली बात, we'll be repeating what we talked about Babar's knock in the first game कि singles नहीं निकल पा रहे, and people tend to ignore the fact that strike rotation is the key to any batter's game. No matter how brutally aggressive you are or how classy you are, if you're not able to rotate strike, you will eventually build enough pressure upon yourself and your partner that at the end of the day, when the time will come to release it, you'll eventually throw your wicket away. So, मैच के बीच में भी I tweeted this. I said कि they're digging when the partnership चल रही थी सऊद and रिजवान की. I said कि they're digging a deeper hole for themselves, and when they'll have to come out of it, eventually everything will collapse. But in the end, यही हुआ कि we had that collapse. But ये बात तो सब कर रहे होंगे इस वक्त कि भाई रिजवान ने बहुत स्लो खेला सब ने स्लो खेला तू सब स्लो खेला बेहतर खेल सकते थे आई थिंक दिस मच कॉन्वर्सेशन विल बी हैपनिंग एंड इट विल कंटिन्यू टू हैपन एंड वी आर नॉट सेइंग कि नहीं स्लो खेला या अच्छा किया स्लो खेल के obviously it wasn't suited neither to the scenario nor to the style of play that Pakistan needed to play to win the game. But जो एक इसका दूसरा एस्पेक्ट दैट यू कुड लुक एट इज जो पहले भी बात होती रही थी कि आवर बैटर्स डू नॉट ट्रस्ट द मिडल टू द लोअर मिडल ऑर्डर स्पेशली जो हमारे टॉप 3-4 बैटर्स होते हैं ना वी हैव सीन दिस in this era when we have had Babar Rizwan being there they try to take things deep themselves rather than trusting the people coming after them and taking risks which will eventually lead to them losing their wickets. So what they try to do is कि बहुत end तक खींचते हैं but then try to attack themselves वो भी नहीं होता and they get out और जो नया वाला होता है उस पर eventually बहुत pressure the point I'm trying to make here is कि कल जब इन लोगों की बारी आई सलमान अली आवा and खुशदिल शाह उसके बाद तैयब ताहिर so essentially the thought behind Rizwan playing that shot in getting out bold जो हुआ वो going down the track and also साउथ की तो खैर अलग बात करेंगे but Rizwan तो I think what I am thinking of the mentality of these batters is कि अभी भी they'll try to put it in such a way कि उनका point vindicate हुआ है कि सही बात थी कि वो ट्रस्ट नहीं करते अपने लोअर मिडल आई एम नॉट सेइंग कि बात सही है या गलत है विल से कि क्यों गलत है आई टेल यू बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि उनके जहन में बिकॉज हमारे यहाँ क्रिकेट की नॉलेज में यू कुड आर्ग्यू कि क्रिकेट खेलते तो सब हैं लेकिन क्रिकेट की जो सेंस है वो इतनी मॉडर्न गेम की इतनी हम इतने पीछे रह चुके हैं आवर प्लेयर्स सो behind on everything they do not essentially know to what is the role of the people who are going to come after them there they have a high risk high reward wali policy वही role है उनका they'll get off if we had one of those three batters play at a phenomenal strike rate तो हमारा स्कोर इससे बहुत ऊपर हो जाता बट इवेंचुअली वो तीनों नहीं खेल पाए क्यों नहीं खेल पाए क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो चुका था उससे पहले वाली पार्टनरशिप पे की वजह से कि at the end of the day they just succumb to the pressure you'll have to agree that they are not as great players as you'd want in those positions चलो आगा को we'll call it an off day क्योंकि he had been pretty decent or consistent with his performance but you could say कि कल दिन नहीं था he tried to
जैसे स्ट्राइक रोटेशन जो कर रहा था, he wasn't playing a lot of dot deliveries, but वो एक rash shot खेलने की कोशिश, just to get going, and in the process he got out. Khushdil managed to take us deep, but South की दूसरी बात, South's dismissal. पहले ये बताओ कि what do you think is South's dismissal? What are your thoughts? Can I tell what I was trying to? Huh. So, sort of before that, you were mentioning the trust wala part. Yeah, I think this idea of wicket bachana and wicket bachana and not trusting the lower middle order is so inherent to Pakistan cricket that even if you get Damien Martin in at number 5 or 6, these players will continue to play like this because I think ये जो mentality है ये inherent है पाकिस्तान क्रिकेट में. सो ये वाली एक मुझे बात करनी थी, बट देन सेकंड अबाउट द साउथ डिसमिसल, आई वुड से कि रिजवान के आउट होने के बाद मे बी अगेन वही वाली बात हो जाएगी वापस कि आप जो वापस डिफेंसिव जो हो गए, लेकिन मे बी शायद उस पॉइंट पे जो रिजवान के आउट होने के बाद जो उसे एंड तक प्रॉब्ली खेलने की जरूरत थी बिकॉज ही was the one who was set and could have like scored runs more quickly than the people who were actually coming in. तो ये वाली एक साउथ का आई वुड से कि है। दूसरा एक ये है कि मतलब साउथ शकील पावर हिटिंग का जो गेम है that was like also sort of exposed at that point, but honestly you can't even blame him इतना ज़्यादा because he's the only batter who actually played सही तरीके से. यार इसमें there are two sides of the story. जैसे you yourself mentioned कि एक तो ये था कि he should have taken it deep being the set batter on the pitch. दूसरा ये कि modern cricket demands you to just once you are set तो फिर go after it, trust the batters coming after you, which he tried to do, but not questioning what he tried to do, but just observation I had was कि रिजवान जैसे आउट हुआ, you saw साउथ के डिसमिसल से पहले he gave another chance, वो कैच ड्रॉप हो गया, थोड़ा सा रह गया. I felt कि South became a walking wicket just after Rizwan got out. He was done batting at that stage. The way एक होता है कि you're trying to play a shot getting out. This for example, you take a look at Agha. He tried to come down the track, hit a six essentially, and then got. साउथ ने जो दोनों शॉट्स खेले, टू एक पे जिस पे कैच छोटा जो स्पिनर पे आई गेस ही वाज प्लेइंग, और दूसरा पेसर पे जो आउट हुआ है, दोनों शॉट्स को आप देखो, you would observe कि both shots were not boundary options for him. Neither were they एक तो टाइमिंग तो you look at it after, but जिस तरह उसने वो शॉट को खेला, it didn't look like he was trying to neither was he trying to pick out the gap, nor was he trying to clear the fence. It was an in between stroke, और ये in between strokes कब होता है जब either the batter is tired या तो he was too exhausted with the innings that he had played, which could be No, I would say he was in two minds basically. He was also in two minds कि मुझे क्या करना है. but दूसरी बात है कि he was in two minds. He didn't know whether he should go along, run strike rotate करता रहे, which he was doing pretty nicely at that stage. दूसरा ये कि he would just go at it. So he was confused. I would say that he was confused. दूसरी चीज ये एक और argument था इसमें कि you look at how Rohit Sharma uses Kuldeep Yadav and how well South played the spinners of the Indian bowling lineup, especially Kuldeep. So, what I felt was कि थोड़ा सा had he thought about it कि क्योंकि पेसर आ गए थे नेक्स्ट ओवर में, तो वैसे it's all in hindsight, but had he taken a bit more time, or maybe he would have said to our, I'll play out the pacers, I'll go full out attack on spinners. That is what I have. Uh, that is what I can do best. तो वो बात बेसिकली समझ. कुलदीप के 5 ओवर बचे हुए थे. एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जितना मैंने फॉलो किया, रोहित ऑफन डज दिस के वो ही यूजेस कुलदीप इन द फाइनल 10 जब एक फील्डर बाहर एक्स्ट्रा होता है. So this also gives confidence to the spinner. तो उस वक्त South's street smart cricket was required for us, जहाँ एक चौका इन ओवर प्लस 5 सिंगल्स, तो 8-9 इन ओवर अगर हम ले लेते ऑफ कुलदीप, pacers को essentially one of the other batters on the other end, Salman or you could say Tayyab or even Khushdil, could take them on. तो थोड़ी सी अगर स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट उस वक्त खेलते rather than both batters going all on attack, चलो हमने कह दिया ऑल आउट अटैक जा रहे थे आप,
बट द थिंग इज कि आपने ये काम अगर पहले किया होता तो essentially you would have given पाकिस्तान more of a chance. इस स्टेज पे आके आप ऑल आउट अटैक होके जा रहे हो तो यू आर अगेन वही जो मिडिल फेज वाली बात है ना, बीच में रहना, ना एक तरफ कमिट करना, ना फुली डिफेंसिव होना। तो आप बीच में ही कहीं रह गए, फंस गए, और इवेंचुअली यू हैड सॉर्ट ऑफ a nothing total in the end. वही वाली एंड बात वही कि you score 170 or you score 240, it doesn't make much of a difference. Either you score 300 or you score 170, तो फिर फर्क आता है। आई मीन या वही वाली बात है कि आप जो है वो लाइक व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि प्रॉब्ली जो है वो आप अगर पहले ये काम कर लेते अटैकिंग वाला तो मे बी आपको इतना रैश मैनर में करना भी नहीं पड़ता। गेटिंग माय पॉइंट, आपने इतनी ज़्यादा बॉल्स वेस्ट कर दी, आपको लाइक बिल्कुल हाई रिस्क होना पड़ा, लाइक यू हैव टू हिट गो फॉर रैश शॉट्स, राइट? उस पॉइंट पे जो है वो उस पॉइंट पे अगर आप पहले जो थोड़ा जो ट्राई ट्राई टू गेट गैप्स वगैरह एंड जनरली ट्राई टू रन बिटवीन द विकेट्स, तो मे बी आपको जो है वो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, इस तरीके से नहीं आउट होना पड़ता। सो बट उससे उसके उससे पहले जो है वो वी हैव टू गो टुवर्ड्स द ओपनिंग पार्टनरशिप एज़ वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर, आई थिंक, I mean, so yeah, we can say that it was much better than what was happening before. But again, you expect more from Babar. But secondly, Imam ul Haq, I mean, is तरह conditions are basically the golden opportunity. Even before Rizwan and Saud वाली बात, I mean, आपको opening partnership की थोड़ी सी बात करनी है. So Babar, I mean, it was much better than what was happening before, but still you expect more from Babar. But secondly, Imam जो है वो those kind of conditions were golden opportunity for him, and the way he threw his wicket away, I mean, you don't like. I think it's a rule in cricket that you don't take on Aksar's arm inside the circle, right? So वो जो I mean I really felt that that was like the most unnecessary wicket that we lost. सुसाइडल रन आउट था यार, तो इट वाज सुसाइडल रन, बिल्कुल कोई सेंस नहीं थी उसकी। एक तो आप आइदर यूर अ विराट कोहली ऑफ रनिंग, या आप जो है वो जो दो लोग मिलकर रन करते हो आप अकेले रन कर रहे हो, तो यू हैव दैट इंटेंसिटी इन योर रनिंग, यू से आई बैक माई सेल्फ, आई गेट देयर। यू आर essentially one of the weakest runner between the wickets in recent times in Pakistan's batters, amongst Pakistan's batters. तो वो जो स्टैट कमेंट्री में भी आ रहा था कि he is the most, I guess he has the most runouts amongst the recent Pakistan batters. तो वो वाली बात कि you look at this and then you say कि he still thought he'll get through with the run. Plus he timed the ball very well at that shot हाँ, कि बिल्कुल हाथ में गए. Plus you take, and Akshar was not at the circle, थोड़ा सा अंदर ही था वो. Then it wasn't that hard for him to hit the wickets. 3 stumps to aim at. He isn't a Pakistani fielder. He'll miss from there even. तो suicidal run. Plus I guess वो pressure build हो चुका था वहाँ पे इतना. इससे पहले भी ही ट्राई टू गेट डाउन द ट्रैक, और ये प्रेशर किसने क्रिएट किया था? इमाम ने खुद क्रिएट किया था अपने ऊपर, प्लेइंग दो शॉर्ट डिलीवरीज। ही एसेंशियली ट्राई टू प्ले यू नो दैट big shot that he tries to play on the leg side या over mid on against the pacer, वो भी टाइम नहीं हुआ था, बॉल अंदर ही रह गई थी। सो दोनों occasions पे he didn't look that confident. बट द थिंग इज कि इमाम को बोलना तो बात की बात है। द थिंग इज कि you're playing an opener who is not part of your 15. So you went with already you went with a single opener. Then you had a reserve wicket-keeper slash opener who you didn't trust enough to play in the game, and you thought and कि then we'll bring and then someone. there was another opener outside 15 जो कि आपके लिए 2 साल से जो ओडीआई में ओपनिंग कर रहा था, आपने उसे भी छोड़ दिया एंड उसके बाद यू वेंट टू इमाम। यस, आपने उसको भी छोड़ दिया, बट द थिंग इज पहले तो आप स्क्वाड, यार आपने स्क्वाड सिलेक्ट किए, इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी, देयर आर पीपल ओवर देयर हु आर maestros of the game. They selected a squad 15 members. They said no, we'll not take an extra opener with us. We have Fakhar only. We'll try to do something else with the other one. We'll have Usman Khan as a backup wicket keeper as well as a backup opener. We trust him enough that we'll have him in the squad as covering both the bases, as a backup wicketkeeper as well as the opener.
उसके बाद क्या हुआ, यू हैव द बैकअप को तो आपने कुछ ट्रस्ट व्रस्ट किया नहीं, आपने कहा बाहर से बंदा ला रहे हैं उसको, जिसको सॉर्ट ऑफ टैग लग गया है कि ही इज बीन रिजेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट फॉर द पास्ट 2 or 3 years, यू ब्रॉट हिम बैक, पता नहीं कौन से कॉन्फिडेंस में होगा वो भी, हाउ के ही वाजंट ट्रस्टेड ऑन द फर्स्ट ओकेजन, ही इज अ बैकअप नाउ, और फिर वो आया, what he did previously as well, कि tricky pitches पे, ये तो tricky भी नहीं थी खैर इतनी, but they managed to, he managed to do nothing out of it. जो important बात एक और मैं कह रहा था, the thing is कि did you observe enough movement in the first innings कि you would argue कि pitch completely change हो गई थी second innings में, everything changed a lot in the second innings, ऐसा कुछ सीन हुआ था क्या कि because as much as I saw कि first innings में हमने हार्दिक पांड्या, no disrespect to him, he's a great bowler, but उसको हमने we made him essentially a बुमराह और मे बी भुवनेश्वर कुमार एट सम स्टेज, इतनी स्विंग हो रही है, बॉल बॉल अलग से बाउंस हो रही है कि आवर बैटर्स हैड नो आंसर टू हिम। सिर्फ जो शुरू में बाबर ने एक तो 2-3 चौके मारे ऑन बैड डिलीवरीज, उसके बाद तो आवर बैटर्स इवन आफ्टर द पावर प्ले played him like he's one of the greatest bowler pacers ever to grace the game. I don't think ये mindset क्या है to boggle down on everything, to जो फिफ्थ बॉलर होता है, दुनिया की हर टीम उसको फिफ्थ या सिक्स बॉलर को टारगेट करती है, पाकिस्तान वो वाहिद टीम है पूरी दुनिया में जो उस बॉलर को विकेट्स देती है, और उस बॉलर को इतना इतना डर के खेलती है जैसे वो उनका मेन प्राइम बॉलर है। दिस इज जस्ट पाकिस्तान फॉर यू, और ये अभी नहीं है, हमेशा से हो रहा है फॉर द पास्ट 5-6 years, यू सी हमेशा हार्दिक पांड्या प्लेज, ही टेक्स विकेट्स ऑफ आवर प्राइम बैटर्स, जैसे द वंस हु शुड बी टारगेटिंग हिम पर से कि उसको टारगेट करें, रन लें, चलो शॉट्स ना मारो, बट एटलीस्ट टेकिंग फॉर 6 and over, if you're taking the other main bowlers for 3 or 2 and 2s and over, तो they they just manage to go into that shell, और वो माइंडसेट वाली बात आ जाती है कि मेंटालिटी जो है वो बिल्कुल ही वीक है, they do not have enough in their minds, they do not have enough faith in themselves to just go on with it. या एंड इसके अलावा जो तुम कंडीशंस की बात कर रहे हो कि वो स्विंग, द थिंग इज के इट्स अ फैक्ट कि अंडर लाइट्स जो दुबई में बैटिंग करना आसान होता है। आई मीन पाकिस्तान का होम है यूएई लिटरली, दे शुड नो अबाउट दिस। तो ये भी एक पॉइंट है कि फिर मेरी बैटिंग फर्स्ट wasn't the right call at all because you want to chase under उसमें light. तो they were under the impression कि जो लास्ट गेम हुआ था बांग्लादेश और इंडिया का, मोस्ट ऑफ द पीपल आई सॉ टीवी पे भी, ट्विटर पे भी, आई डू नॉट रिकॉल सीइंग एनीवन बिफोर द टॉस या इवन बिफोर पाकिस्तान स्टार्टेड बैटिंग criticize the decision of Pakistan going on to bat first. Including me myself, obviously we weren't there to look at the conditions, neither are we experts in it. हमने भी इसी बात को सबने सुन के, former cricketers are saying, people are saying it's a good toss to win and bat first because of the fact that second time round पे conditions थोड़ी सी change होंगी कि ball maybe will start to grip a bit more. Hello, can you hear me? हाँ, I can hear you. ओके ओके, चलो आई जस्ट कंटिन्यू विद व्हाट यू। हाँ, इसके इसके हाँ ओके, यू राइट। एंड इसके इसके अलावा जो है वो एक और एक चीज़ फिर ये भी थी कि जो है वो बॉल जो है वो शाहीन की भी मूव हो रही थी अच्छी खासी। इट्स जस्ट दैट ही डिड वेल एट द स्टार्ट बट देन ही वाज, हम बोलने पे भी आएंगे बट ही वाज क्रैप उसके बाद जो है, मतलब ही वाज ओवरडूइंग इतना ज़्यादा जो है वो उस फुल इन डिलीवरी को। इट वाज एंड इट वाज थोड़ा सा रिडिकुलस बिकॉज़ आई कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ 2020 में जो शाहीन था उससे भी 2022, बट देन एट दिस पॉइंट शाहीन इज experienced and he has learned and he has talked about it himself कि he needs there have been occasions where he's learned how to bring the ball back length के हिसाब से, and then he's also like learned to move the ball away as well and he's been doing that as well. It's just that पता नहीं क्या माइंडसेट था उस पॉइंट पे कि जो है कि आप बार बार जो है वही फुल बॉल जो है डाले जा रहे थे अंदर आती हुई, जो कि जिसको ऑब्वियसली शुभमन गिल वाज ड्राइविंग थ्रू द कवर्स विद ईज बिकॉज you don't get it right every time. So
आई वुड से कंडीशंस, यस ऑब्वियसली अंडर लाइट्स जो बैटिंग आसान हो गई थी, बट देन इसके अलावा जो है वो बॉल भी मूव हो रही थी शुरू में। ball move for 80. You see, he took, Rohit Sharma's wicket. It was a pretty good delivery. Any batter, any right-handed batter in the world would have, struggled to play that delivery. Rohit was clean bowled on it. तो you could say कि movement तो थी, अंदर आने वाली बॉल को होल्ड किया है उसने प्लेयर को. तो it isn't he didn't have enough support on his side. The only thing is कि he was trying to either be over ambitious, but हाँ हाँ। यार इतना you won't say you don't classify Shaheen Afridi right now to be as an inexperienced bowler or as a rookie or as a youngster. Now you say you're the leader of the Pakistani bowling attack. You need to take responsibility. अगर आप बच्चों वाली बच्चों वाली तो खैर गलत हो जाएगा, बट यंगस्टर्स वाली हरकतें करेंगे कि आप बिल्कुल ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं. यू ट्राई टू टेक विकेट ऑन एवरी डिलीवरी फुल फुल फुल. It is not how cricket works. You need to adapt according to the situation. आपने देखी मैंने 2-3 ओवर ट्राई किया फुल लेंथ पे. आई वाज गेटिंग हिट फॉर रन्स. तो लेंथ पीछे पुल करो. ही ट्राई टू पुल इट ऑन अ फ्यू ओकेजन्स, लेकिन फिर आगे जाके वही करने लगता था. तो इट आई डोंट नो क्या रीजन है. कोई टेक्निकल इशू है या वही मेंटालिटी वाली बात है जो पूरी टीम की बात हम करते हैं कि दे हैड जस्ट एसेंशियली गिवन अप कि भाई कोई आगे वाली बॉल पे आउट कर लिया तो कर लिया, वरना पीछे तो रन पड़ेंगे ही पड़ेंगे. ये वाली बात थी. प्लस बॉलिंग लाइनअप पे देयर इज अ लार्जर कॉन्वर्सेशन टू बी हैड कि व्हाई हाँ हैव वी रिग्रेस्ड as a bowling lineup in ODI cricket, throughout time. It isn't just about conditions, क्योंकि फिर क्वेश्चन आएगा कि you played in अभी recently those series away from home. Bowling was pretty set. You were ready to go. You were saying it's good. The thing is कि my opinion on this is कि आपकी बॉलिंग का असल कैरेक्टर जज तभी होता है जब मुश्किल पिचेस पे आपको बॉल करानी होती है. By मुश्किल pitches, I mean कि where there's very little for you to take, very little on offer, where the batters are going against you, जहाँ पता चलता है. It's pretty easy to say कि भाई रन बहुत पड़ते हैं और जो है पूरी दुनिया में पड़ते हैं. 300 सवा 300 350 एक बहुत चेजेबल अब वो हो गया है. और जो है आपके बैटर्स को ज़्यादा करने चाहिए थे, बॉलर्स का कोई. आई एग्री, बैटर्स को हम जितना बोलते हैं बैटर्स आर मोर टू ब्लेम in the successive losses for Pakistan than the bowlers. But the thing is, bowling may we always used to see Pakistani bowlers make a game out of essentially nothing. कुछ नहीं होता था और पाकिस्तानी bowlers used to give us hope by taking early wickets या pressure बनाते थे, कुछ भी करते थे. The thing is, do you feel, क्योंकि मैंने observe किया कि right now we are lacking that extreme, क्या कहें, क्या word use करें, you'd say कि वो एम्बिशन हम लैक कर रहे हैं कि विकेट्स नहीं मिल रही तो बस इट्स द एंड ऑफ द डे, खत्म, घर जाओ. या दे से कि ट्राई टू गेट अदर वेज टू टेक विकेट्स. यंगस्टर्स होते तो हम ये बात कहते हैं इट्स इजी टू गिव अप फॉर यंगस्टर्स या इट्स इजी फॉर देम टू गो ओवरबोर्ड. बट अब तो हम यंगस्टर्स वाला टैग हटा देना इन तीन बॉलर्स में से अपने नसीम शाहीन और हारिस पे. वही मैं कह रहा हूँ कि 3 साल पहले तो जो लाइक आई वुड हैव बीन फाइन एज आई मेंशन कि यू कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम 2021 का शाहीन, 2020 का शाहीन, बट लाइक अब एट दिस पॉइंट शाहीन इज वेरी एक्सपीरियंस्ड. प्लस इस पे सिली a great Twitter account, and he has a lot of contributions for Pakistan cricket. He has written an incredible thread on Pakistan's bowling. Ke, while the batting has always let us down, it's the bowling which is like really harrowing at this point. Ke, kya ho gaya hai? And he says ke uh, time and time again we have talked about how good Naseem, Rauf, and Shaheen are, and they have been seen as the superstars of Pakistan cricket who will take Pakistan forward. But इट्स जस्ट दैट उनकी हमेशा जो इंजरी मैनेजमेंट के हिसाब से एब्सोल्युटली लाइक जो उनको कोई वो नहीं जो उनके साथ होता है. वी नो कि शाहीन के साथ जो जब इंजरी हुई थी तो क्या हुआ था इन 2022. प्लस इसके बाद जो है वो दिस हारिस रऊफ का भी जो इतने मसले हुए बीच में अलॉन्ग साइड इंजरी. देयर वर अदर इश्यूज एज वेल, नसीम शाह भी. सो ही वाज टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज वगैरह भी कि कि we continue to play them in bilaterals, and
उसके अलावा जो इसकी वजह से हमारे जो और जो बैकअप है वो भी जो है वो डेवलप नहीं हो पाते, सो वी आर बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड ऑन थ्री फास्ट बॉलर्स, एंड उन तीनों को भी जो है हम चेरिश नहीं करते सही तरीके से। सो पाकिस्तान बॉलिंग का तो जो लाइक आई थिंक इट्स अ मेस जिसका आपने जो सीड है वो आपने खुद प्लांट किया है और मतलब करते यार जा रहे हैं हाँ, बेसिकली। तो I was referring to the same thread. ये वही वाली बात I also read it and I really found it a different angle to look at everything that's going on. Obviously बहुत ज़्यादा bowlers पे भी criticism हो रहा है, batters पे तो हो ही रहा है, rightly so. Bowlers वाले पे I think कि ये वाली बात सही है कि they do not have enough rehab facilities available. Not enough, but facilities that actually cater to their specific needs. So I think कि इसमें बात होनी चाहिए. Obviously, there's a lot to say, but my counter argument or what I saw other people talking about online was कि क्या ये प्लेयर की obviously बोर्ड की जिम्मेदारी है, बट आपको पता है कि आपका बोर्ड will not give you those facilities and will probably is more likely to mess up your injury. But if you take charge of the rehab yourself, do you think players could have taken these initiatives considering they have the you know जो monetary फाइनेंशियल। benefit from playing leagues? I'm just putting out the case that other people had, हाँ which I हाँ sort बिल्कुल। of agree with. I had my own reservation on it as well. They say that you have batters के लिए it's easy. We think to have personal consultants go abroad, work on the technique, come back. Injuries के लिए specifically, don't you think कि it's because career की बात है, board नहीं कर रहा नहीं करे, आप अगर खुद अपने उसका career का you do not take charge of it yourself, then you will only be left to play the blame game that we're having right now. यार It will take देखो, time for you to recover, and we'll essentially lose those resources. जैसे essentially we lost एहसान वाला जो thread में भी लिखा हुआ था कि सिर्फ इस इंजरी मैनेजमेंट की वजह से. हम्म। यार द थिंग इज के फर्स्ट ऑफ ऑल इंजरी मैनेजमेंट जहाँ तक उसकी बात है, इट्स एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव प्रोसेस। आई नो शाहीन, मे बी समवन लाइक शाहीन हैज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर दैट काइंड ऑफ स्टफ, बट एक तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। सेकेंडली, जहाँ तक इंजरी की बात है, शाहीन took the initiative and took that flight himself to London and then stayed in a motel. So उस हिसाब से तो मे बी इंजरी मैनेजमेंट का तो मे बी दे डू हैव एन अवेयरनेस कि हमारा हमारा करियर इज ऑनलाइन। बट जहाँ तक मेरे तो ख्याल में ज़्यादा बड़ा कंसर्न जो है वो ये है कि players don't have the resources from the board they day to day, so then they should manage it for themselves. As an example, स्मृति मंदाना जो है, the Indian player. I mean, she's so incredible वैसे, and so she has a personal chef, personal trainer, and everything, and it's a specific thing that is talked about a lot. And so पे यही वाली बात है कि why don't these players do this? तो इसमें पे इसका जवाब यही आता है कि the kind of awareness and mentality and वही सब चीज़ें aren't there for these players from the grassroots basically. And so जब इनके पास like monetary resources आते हैं, तो first of all most of them are belong to, unfortunately due to Pakistan's economic situations, they belong to underprivileged backgrounds, and so they try to fix that stuff first, and no one can blame them. But then उसके बाद भी जो इस तरफ बात like नहीं जाता naturally ख्याल, and so यार इसमें आई थिंक देयर इज अनदर फैक्टर रादर. ये वाली बात भी है, यू राइटली मेंशनड. आई थिंक जो तुमने अवेयरनेस वाली बात की, आई डोंट थिंक इफ आई विल बी एबल टू मेक माय पॉइंट करेक्टली विदाउट बीइंग ऑन द लाइन, थोड़ा सा फेंस पे रह के, बट थोड़ा सा स्पोर्ट्स एजुकेशन. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ जो बेसिक एजुकेशन वाला टर्म है और व्हाट वी हैव, rather than linking it to the term awareness. Do you think our players are uh, literate enough in terms of cricket? They know what their requirements are in any case. उनकी body की क्या requirements हैं, because they're high performance athletes.
उसके लिए इनको क्या क्या करने की ज़रूरत है, सिर्फ या ये प्राइमरीली बोर्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि बोर्ड इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी. इफ यू नीड टू बिकम अ बिग प्लेयर, yani biggest players, you talk about the names such as Babar, Rizwan, Shaheen, Haris, Naseem, which are essentially were termed as the next generation of superstars from Pakistan. So इतना बड़ा आप इतने पाकिस्तान जितना भी आप कह लोगे, यू आई डोंट थिंक दे इफ ये वाले प्रॉब्लम्स फिक्स करने के उसमें इफ दे ट्राई टू प्रायोरिटाइज अदर थिंग्स ओवर देयर करियर्स, तो फिर जब बाद में बचेगा ही नहीं क्रिकेट खेलने को, या करियर वुड बी ओवर सूनर देन इट शुड हैव बीन, तो फिर आप उन उन पैसों का क्या करोगे? आई एम जस्ट ट्राइंग टू, आई एग्री विद एवरीथिंग कि इट्स अ डिफिकल्ट स्टेज फॉर देम इनिशियली ये वाले डिसीजंस लेना, बट डू यू थिंक कि ब्रॉडर पिक्चर पे ये बात होना भी जरूरी है कि ग्रास रूट्स पे हम अपने अपकमिंग यंग क्रिकेटर्स को ये इस अवेयरनेस, यू ट्राई टू एजुकेट देम इन द सेंस कि they should know what their requirements are, what their body's requirements are, what nutrition they need to. I know ये बहुत छोटी छोटी बातें लग रही है इस वक्त, but essentially this comes out on a larger scale for your players कि fitness पे I just envy the way you see other teams and their fielding and their fitness. जिस तरह से वो फील्ड करते हैं, रन्स रोकते हैं. I just looked at विराट and the intensity he showed while running. हालांकि उस वक्त तक they had just गेम लग गया था साइड पे. It was just like a walk in the park for them. Just उस वक्त की बात था. But he still tried to take those doubles. He still tried to counter everything by running those quick runs. So it shows कि it reflects on every aspect of an athlete's game. ये छोटी छोटी चीजें, how much are they aware about the requirements of the modern game, आपको किस तरह अपनी बॉडी को फिट रखना है so that you're able to, आप छोड़ें बोर्ड की जिम्मेदारी क्या है, essentially तो आपने खेलना तो मुल्क के लिए, और मुल्क के लिए आप एज एन इंडिविजुअल खेल रहे हो ना. the board pays you to play for the country yourself, तो आप अपने लिए ही कर लो, बाकी सब चीजें छोड़ दो. तो आई थिंक ये बड़ी bigger conversation is yet to happen and should happen, but इसका क्या इफेक्ट होगा, बेसिकली I do not see. अगर हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि एक्सेप्टेंस हो जाए कि द बोर्ड विल नॉट डू एनीथिंग फॉर यू एंड यू आर बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लकी अगर आपके लिए बोर्ड कुछ करे. एज एन साइम यूब के लिए they're doing a lot, but like you're going to be extremely lucky, वरना जो you are completely on your own. It's a dark reality and उसके बाद आप rectify करें. Now we come towards the grassroots वाली बात कि grassroots में इनको awareness हो शुरू से कि what the requirements are. The thing is कि उसके लिए भी आपको एक system चाहिए. We don't have a system for that as well. And so you एक जो players जो हैं वो उनको basically like खुद से वही नहीं आएगी कि जो हमें ये सब करना है. दैट विल ओनली हैपन थ्रू एक्सपीरियंस इन डिफरेंट लीग्स एंड बाय स्टेइंग इन द टूर्नामेंट. So they're going to learn staying in international cricket. And so वो बेसिकली उनका learning through experience ही जो हो रहा है. Now not every individual in every field is cognizant enough to go to to go the extra mile and do their own research and all that when they come into a field, right? So मतलब it's at the end of the day बात सिस्टम पे आती है. I get your point. I agree with everything you've said. कि every I say कि चलो कोई athlete नहीं होता, already they are so blessed with this specific skill कि they are good at playing that game. तो everyone does not have everything within their personality. हर किसी के पास हर तरह की सोचने की ability नहीं होती. They're good at one thing. Every person is different. So everyone is And I would blessed with say, different abilities. एक I'm sorry to interrupt, but like जो सोचने की हाँ, ability भी जो होती है ना, that is also actually developed through education and the kind of environment that you grow in and even and इसमें obviously हम cricket की बात करेंगे. So when they're rising up through the ranks, so उसमें भी जो the kind of coaching staff that you get, the kind of players that you get अपने essentially, साथ, हाँ बिल्कुल environment toxic नहीं हो. बिल्कुल. यही point I'm trying to make is कि the bigger conversation that needs to happen right now is, मैं यही बात बोल रहा था कि how to have
the upcoming stars, जो भी आपके youngsters आ रहे हैं, through the under 19s, through the domestic. अभी क्रिकेट स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा मैं कि किस तरह उनको क्रिकेट सिखानी है, क्रिकेट में ट्रेन करना है. ये जो मेंटालिटी वाली बात हम कर रहे हैं, फिटनेस वाली बात हम कर रहे हैं, पर्सनल गेम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, पर्सन अपने बारे में अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, ये सब थ्रू एजुकेशन, ये गेम लिटरेसी जो भी आएगी आपकी थ्रू स्पोर्ट लिटरेसी, ये आप किस तरह. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रेनस्टॉर्म हियर कि आई नो कि बहुत बात होगी इस बारे में कि अभी क्रिकेट के साथ आपने क्या करना है, बट द लार्जर कॉन्वर्जेशन टू बी हैड इज व्हाट टू डू विद द क्रॉप ऑफ प्लेयर्स यू आर गोइंग टू हैव फॉर द नेक्स्ट 10-15 years. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दैट आई हर्ड समवन टॉक अबाउट कि द लैक, जो तुमने भी बात की थी इन द लास्ट लास्ट पॉडकास्ट, कि पाकिस्तान essentially did not play cricket at home for a large period of time, almost a decade. तो उस टाइम पे जो आपने चीज़ों को मिस आउट किया है बिकॉज ऑफ देयर बीइंग एब्सोल्युटली नो कल्चर तो नहीं कहेंगे बट वेरी लिटिल कल्चरल अडेप्टेशन टू द गेम, यानी आपको लोगों की सपोर्ट ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ मेजर टूर्नामेंट्स में मिलती थी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में नहीं थी ज़्यादा. तो ये सब चीज़ें इवेंचुअली कंट्रीब्यूट करेंगी, बट अब आपको एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ है एट योर होम, यू होस्टिंग इट, तो यू ट्राई टू बिल्ड ऑन अ न्यू बेस, यू से नो वी आर ट्राइंग टू टेक अ फ्रेश स्टार्ट, हम सब कुछ एक फ्रेश तरीके से करेंगे. विल ट्राई टू फोकस ऑन आवर ग्रास रूट्स एज वेल, और किस तरह फोकस करेंगे, नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द वे दे प्ले द गेम बट द वे दे अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द गेम, क्योंकि आगे का जो मॉडर्न गेम है इट इज़ वेरी डिफरेंट टू द गेम वी यूज्ड टू. डोंट यू थिंक ये वाली बात के वैसे बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगी थोड़ी सी, कि people have called a lot of our past players as legends, which they are, undoubtedly you could say, but in conditions में where the game has adapted so much कि natural skill का जो level है, या you could say जो natural anomalies हैं जो पाकिस्तान heavily relied on earlier, वो इन्फ्लुएंस, वो इफेक्ट उसका अब नलीफाई हो गया है, बहुत कम हो गया है. we're essentially seeing, you know जो रियल जो वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट में हो रहा है, you take the example of football and how much they have introduced not just data into the game but वो जो हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स की जो स्किल्स होती हैं उनको किस तरह इम्प्रूव करना है, केटर उनकी नीड्स को किस तरह करना है, ये वाला जो फैक्टर है, डोंट यू थिंक कि इट्स हाई टाइम कि वी स्टार्ट टू शिफ्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम फोकसिंग ऑन या रिलाइंग ऑन नेचुरल एनोमलीज. एक शाहीन अफरीदी आ जाए अंडर 19 से, ही बर्स्ट थ्रू एट 17 और 19 पे आ जाए, उसके बाद, या वी रिलाई ऑन पीपल के किस तरह वी ट्राई टू बिल्ड हार्ड वर्कर्स और उनको उनकी स्किल्स पे काम करें. इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन आई नो, बट आई डोंट यू थिंक दिस इज द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट, रादर देन वही वो घिसी पिटी बातें करना, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको ले आओ, उसको ले आओ. I think bigger conversations need to happen. वरना आप 5 साल बाद, 4 साल बाद, you have a period of one good, पर एक अच्छा साल गुजरेगा आपका based on some luck, some personal performances, milestones, anomalies, और you will be saying again हमारी टीम बन गई, अब हम किसी को भी हरा सकते हैं, और ये साइकिल रिपीट होगी. And I'm telling you ये रिपीट होगी unless and until certain specific changes are made to the cricket culture, the cricket climate of the country. I know थोड़ी लंबी rant हो I गई. mean, of course. I mean, obviously, guys, Zahir. I mean, that's like, you know, mm, asking कि जो do you want good to happen in your life or not? Of course, ये सब चीजें जो ज़ाहिर है होनी चाहिए, and it's it and you are right about the natural skill वाली चीज. I mean, Bumrah won't be what he is today अगर उसकी again सही तरीके से मैनेजमेंट ना होती. Of course, he's exceptionally talented. He has a lot of, nature has blessed him a lot as well. I mean, uske, of course, that has a huge part in it. But then at the same time, जिस systems के through वो आया, and then the way Mumbai shaped him, and then उसके बाद, and actually मैं तो बात मुंबई and इंडिया की कर रहा हूँ, उससे पहले भी जो like इंडियन systems ने उसे nurture किया. It's just that कि जो even Bumrah or people who are on top of all sports, basically like Roger Federer, all these people, like they are the product of the people around them and the systems around them,
and that is what Pakistan cricket needs as well. And you're right, कि natural skill की बुनियाद पे a lot of people were successful, but then the way the sports are being developed and the way technology is being integrated, medical science is being integrated, whatever, it's just that that stuff might just not work anymore to that degree like how it did before. But yeah, thoda sa, let's just sort of come back to the game as well. I want to talk about uh, I want to give a special mention to that shot that Gill played against Shaheen. The way he did, Shaheen full ball करवा रहा था and all that, and then Gill जो है वो just stepped down the track and said कि ये game मेरा है, this is my game, and this is not your game, and I will boss you. This is what he said with that shot. I mean that it just I think that shot represented the whole game, I would say, and it also represented the sheer difference between Pakistan's approach and India's approach to basically begin their innings. So yeah, this is something that I really want to talk about that shot specifically because it was incredible. But then उसके बाद जो अगर हम नसीम शाह की तरफ आए, don't you think वो भी जो बहुत ज़्यादा like Joe, he was being very defensive when we needed the wickets. His economy is good, but he was defensive. यार नॉट ओनली एक तो बैलेंस वाली बात आई फेल्ट कि दे हैड गिवन अप प्रीटी हाँ, शाहीन की एक विकेट से पहले यू नो वी टॉक अबाउट आई नो मैं बहुत ज्यादा साइड ट्रैक कर रहा हूँ बट एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट टू बी टॉक्ड अबाउट इसलिए वी I you ask a specific question, I go the complete opposite way. I go back to Rohit's that short and sweet innings, the effect that it created on the mm, Pakistani bowlers, and we've talked about it multiple times. कि start of I said this game से पहले टॉस के बाद कि the first 10 overs of both the innings will decide the match. And eventually वही हुआ. You lost 2 wickets in yours. रन आपने थोड़े बहुत कर लिए थे तो आप इतनी इज्जत वाले टोटल पे आपके मुताबिक पहुंच गए वरना आपसे 200 भी नहीं होना था. दूसरे एंड पे their 10 overs were it showed you how ODI the modern ODI yeah, cricket is played. किस तरह खेली जाती है. Rohit 3.0 is not just about Rohit doing it for himself or how he has thought how I need to change my game, but he has also thought about the team, the kind of players that surround him. We all know what Rohit is capable of. He is capable of playing those long innings, 200s, double hundred score games. So there is no doubt about the capabilities he has, but he's also the leader of the side. He also knows he's surrounded by players like Shubman Gill. He knows Virat Kohli will come down. So he knows कि वो जो responsibility उसके ऊपर थी essentially initially to carry on with his innings, take it till the end and keep scoring runs at a stable pace. He said, "No, I'll change it. I'll give my team the start it needs up front. I'll give my team such a boost of confidence that the other team I'll essentially crush the hopes and dreams and the confidence of the other team bowling line. So it not only I may lose my wicket in the process, but in the process I'll also be able to instill more confidence in my batting partner as well as the ones to follow. उसकी वजह से I think he successfully managed to create that effect specifically on Naseem. एक Naseem, do you think Naseem injury से आने के बाद has he been the same? He has shown glimpses here or there of him being that Naseem that we used to see previously. बट वही वाली वो इंजरी मैनेजमेंट वाली बात घूम फिर के आ ही जाती है एट द एंड बट आई थिंक पाकिस्तान हैज बीन अनलकी इस मामले में नॉट अनलकी यू कुड से बट एज फैंस वी हैव बीन अनलकी कि वी सॉ players with extreme potential and those high ceiling wale players but injuries and a lot of other factors contributed in them becoming pretty mediocre players. The word हाँ, the term I'll use for the current crop of players is that we have overhyped mediocrity at this stage. Not initially. Initially there was promise. तो promise पे तो आप judge नहीं कर सकते. Promise पे आप support कर सकते हो. But अब promise वाला जो
era था वो खत्म हो गया. Now it's time for them to deliver, to showcase, to essentially perform. And at this stage पे आके we can judge them and we can say कि we've essentially normalized mediocrity in the Pakistan cricket circles. Speaking of promise, Abrar, I mean, he did so well, and इसीलिए कह रहे थे सुफियान नदीम को भी खिला लो because he's very much needed. You can't go into a tournament in Pakistan UAE with one spinner. But खैर वो बहुत हम बात कर चुके हैं उस बारे में. A lot of idiots on Twitter are criticizing Abrar for the celebration. I mean, the guy he's the only person who actually bowled well, क्या who played well in the whole team. I mean, and a lot of people weren't expecting much before the tournament from Abrar, but like even the New Zealand wala game and ye wala game, like he was, I would say he was exceptional, यार. मतलब बट वही वाला उस बेचारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ही वाज क्रिएटिंग प्रेशर. बेचारा जो है वो ही वाज पुटिंग ऑल ऑन द लाइन, ऑल ऑल आउट ऑफ हिज बॉडी, बट देन जो है वो दूसरे एंड से जो रन्स हो रहे थे तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रेशर बीइंग क्रिएटेड. एंड देन एट द सेम टाइम जो इफ अगर उसे पता था कि जो इफ बेसिकली ही इज गेटिंग हेल्प फ्रॉम द विकेट, तो दूसरे एंड से जो यू डिडंट हैव एनी फॉर्मिडेबल स्पिनर जो कि जो वही काम कर सके जो अब्रार ने किया या फिर जो कुलदीप ने किया, अक्सर ने किया पहले. आगा एंड खुशदिल, लाइक वी सॉ व्हाट हैपेंड विद आगा जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने किया था. एंड and even the fact that Khujdil actually didn't concede as much, but still itna ke jo India chased their target, it just represents the fact that how poorly Pakistan planned in terms of the spin bowling department. But yeah, thoughts on Abrar? Yeah, I think he bowled well. He bowled very well. He bowled better than all of us expected him to do. He bowled Uh, not. I would not say exactly like the role which would have suited Pakistan, the full-on attacking spinner. I think it's not his nature. Nature wali hmm. baat to nahi khair, but it's not in his JD to be bowling that. He essentially did not fit that role that he was selected for. He was more fit for a role of playing alongside a wrist spinner. बट हमारे जो खैर उसको हो चुकी है बात कह रहे कि इस तरह ही would have been much more lethal had he had would have वाली बात. बट अभी वाली केस में आई थिंक credit goes to him. He bowled well plus के जो उसके साथ थे everyone else was pretty much ordinary. तो उसमें से ही was an exception. बट एक पॉइंट ये भी मैं रेस करूंगा, not discrediting his bowling at all, कि इंडिया were very clever in picking on who to target and who not to target during the chase. We saw in Okay. that post match talk by Virat कि किस तरह they had decided कि हम spinners को defensively खेलेंगे. ये भी नहीं कहा कि we'll we'll attack them slightly less. He said कि हम spinners पे chance नहीं लेंगे. We'll take the chance against the pacers, and that was all they needed to do as well. आप जितना भी प्रेशर क्रिएट कर लेते दूसरे एंड से पेस वाले एंड से वो प्रेशर रिफ्लेक्ट हो ही रहा था, वो प्रेशर जो है वो रिलीज हो ही रहा था. तो essentially Abrar did the most he could have done. Maybe he could have done much better कि wickets और ले लेता, but I think it is too much to ask from him. But जितना उसका limited role था, जितनी उसकी capabilities, I think he bowled well against a side which could have essentially played him out of the attack and played him out of the Pakistan team as well. Okay, they spin players, they are इंडिया से अच्छे स्पिन खेलने वाले बैटर्स दुनिया में you could name any team other than India to play spin better. अगेंस्ट पाकिस्तान वैसे ही एक प्रेशर होता है. आई जो मैं पॉइंट रेज कर रहा हूँ स्पिन को सुकून से खेलने वाला, आई एम बेसिंग दिस पॉइंट नॉट ओनली ऑन व्हाट विराट सेड बट ड्यूरिंग द गेम. इफ यू लुक एट खुशदिल्स फिगर, he wasn't hit around the park for much, or it isn't that he bowled very well. Khushdir was also pretty ordinary, और outside off stumps बहुत loose balls दी उसने, which at some stage Virat and Shubman और उसके बाद Virat and Shreyas Iyer as well, they didn't hit him as well as they could have hit him. तो वहाँ पे वो mindset reflect हुआ कि they weren't even targeting them. They said कि we can easily milk you for 3 or 4 and over, या अब्रार को थोड़ा और सुकून से खेलेंगे, अच्छा बॉल है. ये मेंटालिटी को लेके आए थे. They said कि
पेसर्स को हम देख लेंगे, हम खेलेंगे. Had our pacers been a bit more applied to the conditions, थोड़ी variations को use करते, had they been more attacking in the sense, I'm just we are talking about this in hindsight, but कि विकेट्स ले लेते या प्रेशर क्रिएट कर पा रहे थे, फिर हम देखते कि हाउ इंडिया टारगेट्स द स्पिनर्स ऑफ पाकिस्तान. अभी तो नंबर्स वाली बात, अगर कोई स्कोर कार्ड देखेगा तो वो कहेगा हाँ अब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, विच ही डिड एज वेल, कि अच्छी बॉलिंग कराई थी, बट खुशदिल ने भी Hmm. बहुत अच्छी बॉल कराई. ही प्लेड हिज रोल ऑफ सपोर्टिंग स्पिनर, रन नहीं पड़े उसको. तो कोई देखेगा गेम तो वो ये कहेगा बेटा, कोई स्कोर कार्ड देखेगा तो वो ये कहेगा, बट जो गेम देख रहा होगा वो कहेगा कि उन्होंने कोई चांस ही नहीं लिया इनके अगेंस्ट, क्योंकि टारगेट ही 242 था. इस पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उनको कि वो यार आप, इसके या तो वो, हाँ, हाँ गो अहेड. हाँ, वो सेइंग कि इसके अलावा एक और बात ये भी है कि अब अबरार से लाइक he might have taken more wickets, लेकिन दूसरे एंड से एक तो रन्स पड़े, तो he is not the kind of bowler who's going to go 3 and 3. वो ऐसा ही बॉलर है कि प्रेशर होगा, people are going to take chance against him. एक तो बात है. दूसरा ये है कि दूसरे एंड से प्रेशर क्रिएट हो सकता था थ्रू फास्ट बॉलर्स भी, बिकॉज दे वर टेकिंग चांसेस ऑन देम. 2 कैचेस आपने ड्रॉप कर दिए इतने क्रूशल स्टेजेस पे. फर्स्ट वाला खासतौर पे जो मिड विकेट पे ड्रॉप जो हुआ था खुशदल का, मतलब अगर उस टाइम पे या हो जाता तो मतलब लाइक यार आई अब क्या पता जो आप और विकेट्स ले लेते उसके बाद. I I एनीवेज, I I don't think, I think it's highly unlikely कि उस स्टेज पे भी कुछ कर पाते. Pakistan team thrives on taking wickets in the first 10 overs, specifically in the first 5 overs. अगर विकेट मिल जाती है 2-3 तो फिर they're all over the opposition. But इतने कम टारगेट पे the team has played out the 10 overs, और फिर आप जाके ऐसी I'm not saying कि कैचेस नहीं छोड़ने चाहिए, कैचेस ऑब्वियसली पकड़ने चाहिए. हो सकता है जहाँ 4 आउट के वहाँ 5-6 आउट कर लेते, हो जाता है गेम फंसा देते. आई एम नॉट सेइंग कि चांस नहीं बन पाता. आई आई वुड एग्री कि कुछ हर यू हैव टू टेक ऑल द चांसेस. आई एम नॉट सेइंग कि कैच छूट गया कोई बात नहीं, बट कैच पकड़ना चाहिए था. एंड दे वर्ंट हार्ड कैचेस. दोनों जो सऊदी भी छोड़ा एंड जो खुशदिल ने छोड़ा, तो वो तो वैसे हाथों में गैस था. I would बट still think 80 for 3 is much better than 80 for 2. मतलब I mean उस पॉइंट में शुभमन का आउट होना दूसरे end से, I mean आई अगेन बहुत कम चांस है, बट स्टिल would have could have should have हमेशा होता है हमारे पास. I agree. Obviously, there's nothing. Other teams, you look at Glenn Phillips and वहाँ के players, they take catches out of thin air just to give their team an advantage. कि catch नहीं भी वो बनता तो वो लेके वो कहते हैं, I've given this advantage to you. बॉलर को कहते हैं ना, go on take another wicket. और हमारे क्या जो हाथों वाले catches होते हैं, हमारे players वो भी छोड़ देते हैं कि भाई बॉलर ने तो थोड़ी बहुत कुछ किया होता है. But this poorly reflects on fielding standards as well. जो मैंने पहले बात की उस पे ही building onto it कि there needs to be a revamp so that we improve in every facet of the game, not just our bowling or the batting, every facet of the game. So fitness directly impacts fielding. Don't you think कि fitness का ताल्लुक fielding से है? हाँ, Skill वाली बात आती है, you have exceptional fielders जो skilled fielders होते हैं, but जो fitness जितने you you look at how we used to field when Sarfraz was the captain, and not just Sarfraz Steve captain Rickson, only, basically it was Steve Rickson की कोचिंग, हाँ फील्डिंग वही कोच. मैं उस एरा की बात कर रहा था कि हाँ एग्जैक्टली पॉइंटेड आउट करेक्टली कि उस एरा में भी यूज्ड टू हैव फिटर प्लेयर्स. एक तो यंग भी थे सारे, हसन था, शादाब था. शादाब was an outlier, is an outlier still probably. मैं तो हंसता था जब हम इमाम को पॉइंट पे फील्ड करा रहे थे. I was just, he took a great catch in the end. वो कैच अच्छा था, बट उस वक्त तक तो, but I was saying कि fielding is just a big part of sport now, of cricket now, so sorry. But we are essentially, we have bigger problems. हमारे बाकी skill sets पूरे नहीं हो रहे, तो fielding का तो ये लोग कभी बात करेंगे. Yeah, absolutely. And I think I would like to end this with by referencing Rehanul Huq's article. He's like recently written it, and everyone should read it. And he says ki, like you are going to uh, change the whole management. You are going to change everything. But not the right things basically. एंड वो आपके रिएक्शनरी डिसीजंस होंगे, बट एट द सेम टाइम जो आपके सिस्टम में फंडामेंटल फ्लॉज हैं, जो फिलॉसफी में फंडामेंटल फ्लॉज हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लिमिटेड ओवर्स बैटिंग एंड सेविंग द विकेट्स एंड इतनी कॉशनरी अप्रोच, ये जब तक मामला सॉल्व नहीं होंगे हमारे जो वी विल कंटिन्यू टू हैव दीज कॉन्वर्सेशन. ऑनेस्टली आई रिमेंबर
we were having this conversation last year as well after the T20 World Cup, and then usse pehle after the 2023 World Cup, and we went into these tournaments based on being confident about the bilaterals, but then we saw what happened. I think it has become a cycle at this point, but yeah, that इसीलिए is about. इसीलिए इसीलिए But आई सेड कि ना, इसीलिए आई थॉट कि इस दफा थोड़ी डिफरेंट बात करते हैं, कुछ नया, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हम यही बात करते हैं एट द एंड ऑफ ईच टूर्नामेंट जब इसको पाकिस्तान के ड्रॉप करो, सामने उसको खेले। ड्रॉप करो, इसको निकालो, उसको निकालो. हाँ, मैनेजमेंट चेंज करो, प्लेयर्स चेंज करो, आगे क्या करना है, आगे ये टूर्नामेंट आ रहा है, उसके लिए क्या, इसलिए आई थॉट कि इस दफा थोड़ा चेंज करते हैं, वी टॉक अबाउट द ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स, वी टॉक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव। Yeah. हम अगली जनरेशन ऑफ क्रिकेट को किस तरह, क्रिकेटर्स को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, because as fans we only want what is good for Pakistan cricket. Obviously we won't go and talk about personal agendas of certain players. We talk about it on the whole कि आगे किस तरह आपने improve करना है, not just the short term पे हर दफा बात होती है, उससे रिटायरमेंट वापस ले रही है, उसको लिया इस टूर्नामेंट के लिए, सर ये रिटायर हो गया, इसको वापस कर दो, देन 2 साल बाद you say, come back, we need you weren't in our initial plans. तो ये वाली बातें तो होती रहती हैं, they will continue to happen unless we change the culture of the Pakistan cricket from the down till the up. यानी आप ऊपर से लेके नीचे तक सब बदलो, not just personnel, but the thinking, the mindset, the approach to the game, and essentially you will see results not in the short run. ये नहीं कि आप अगली टूर्नामेंट में हो सकता है जीत जाओ, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इट विल बी अ लेंथियर प्रोसेस, एंड पाकिस्तानी कौम वैसे भी थोड़ी जो है वो इम्पेशेंट है, तो आई डोंट थिंक कि इतना पेशेंस है हम एज ए नेशन हमें कि हम रीबिल्डिंग प्रोसेस को बर्दाश्त कर सकेंगे, बट करना पड़ेगा, अगर नहीं करते तो खैर फिर यही होगा, हर एक साइकिल रिपीट होती रहेगी। Yeah, perfect way to end this basically. That's about it from 30 Yard Circle. We'll see you in the next one.